Hello friends, welcome to my new video. Myself Sarita, and today I'm going to discuss on the new topic that is the cell structure. हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, उनकी हिस्ट्री के बारे में देखा था. सो आज हम सेल का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो ओके, लेट मी जस्ट सो फ्रेंड्स, हम आज यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो आप यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं. ओके, सो ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर. ओके, हियर द स्केल इज आल्सो गिवन एंड इट इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर. ओके, सो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स की, सो मेनली अगर हम बाहर से स्टार्ट करें, सो here is the cytoplasmic membrane. Okay, so eukaryotic cell में cell wall नहीं होता है बल्कि cytoplasmic membrane होता है. Then अगर हम और अंदर देखें, so ये जो green color का structure है, that is called as the endoplasmic reticulum. Okay, and here the small dots like structure. Okay, I'll just change the color of my pen. Okay, thank you. So here dots like structure, these are the ribosomes. And सबसे important जो होता है सेल का, जो पूरे हर काम को, हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर है पूरे एंटायर सेल का, वो है हमारा न्यूक्लियस. दिस इज द nucleus, and today we are going to study about nucleus only. Okay, so just before that I'll introduce some of the other organelles. And inside this nucleus, a prominent genetic material is been observed, and that is called as the nucleolus. And ये जो nucleus होता है, ये membrane covered होता है, properly packed होता है, and इस covering को हम कहते हैं nuclear membrane. Okay, and here just near to nucleus you can see the Golgi apparatus, and cells के अंदर semi fluid type structure universally distributed होता है within the cell, and this is called as the cytoplasm. And the other important organelles of cell is जिसे हम powerhouse of cell भी कहते हैं, and yes, this is the powerhouse of cell, and it is called as the mitochondria. And if we'll talk about the plant cells have one unique organelle which is responsible for the photosynthesis, and it is called as the chloroplast. So these are the major organelles which are present in eukaryotic cells. Okay, clear to you all? Okay, so as I have discussed, so today we are going to study about, okay, so one of the important organelles in the eukaryotic structure, and that is the nucleus structure. Okay, so as I have already told you, these nucleus, they are the controlling center of eukaryotics. क्यों इसे controlling center कहा जा रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस में हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है, हमारा डीएनए जो है, जो कॉमनली कंडेंस्ड होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. इन क्रोमोसोम्स में जितनी भी हमारी एक्टिविटी है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सभी इन्हीं जेनेटिक मटेरियल में स्टोर्ड होते हैं, एंड ये जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर. सो दैट्स व्हाई nucleus are called as the controlling center. Okay, now talking about the nucleus, the genetic material in most of the organisms contain one nucleus, and that's why they are called as the uninucleate. जब किसी सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं. बट सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीन्यूक्लिएट. एग्जाम्पल हम लेते हैं पैरामेशियम की. पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस लेते हैं, वन इज द माइक्रो एंड अदर इज द मैक्रो न्यूक्लियस. सो इट कंटेन्स two nuclei. Okay, now
ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड, ओके, हमें पता है जो बेसिक डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का ये यही है कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में सभी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली मेम्ब्रेन पैक्ड होते हैं, ओके, सो दैट्स व्हाई ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग सेंटर है यूकैरियोटिक सेल्स का, ये मेम्ब्रेन bound होते हैं and they are about, the thickness of the membrane is about 5 to 7 micrometer, okay, and अगर हम बात करें न्यूक्लियस की इन द Z0 फेज, Z0 फेज यानी कि होता है रेस्टिंग फेज, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, जब वो सेल साइकिल प्रोसेस नहीं कर रहा है, सो उस समय न्यूक्लियस जो है वो मेनली 4 टाइप्स में, 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नजर आता है, एंड वो डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है। फर्स्ट इज द न्यूक्लियर एनवलप, ओके, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, सो यहाँ पर ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर एनवलप, और ये जो न्यूक्लियर एनवलप होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ओके, सो बेसिकली as they are double membrane, one membrane is called as the inner and the other is called as the outer, okay, here we can see it, this is the outer and this one we can call as it is the inner, okay, this one. So outer membrane of the nucleus is called as the nuclear envelope. In the center you can see the dense part, okay, so this dense part, the genetic material is very much has aggregated at one point and it looks like a spherical dense structure and it is called as the nucleus, okay, so nucleolus. The other third part is just like the cytoplasm. Cytoplasm is the semi fluid present in the cell. वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इनसाइड दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. And fourth and foremost is chromatin, also called as the chromosomes also. Okay, they are one and the same thing. But the basic difference between the chromatin and chromosomes is chromosome is highly dense structure while chromatin is free and extended. सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, एक स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को बिल्कुल टाइटली अपने फोर्स से कंप्रेस कर दे, सो उसे हम जब स्प्रिंग एकदम कंप्रेस होता है तो वो हमको एक सिंगल इंटैक्ट स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, जिसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के लैंग्वेज में वो है हमारा क्रोमोसोम्स. एंड अगर हमने उस स्प्रिंग को लूजली छोड़ दिया उसके स्टेबल उसके एक्शन के हिसाब से, उसके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, सो उसे हम कहेंगे क्रोमैटिन्स. ओके, सो हियर यू कैन सी द फ्रीली extended DNA material and this is the chromatin. Okay, now we'll talk about each of this component one by one. Okay, so hope this is clear to you all. Now just a minute. So first talking about the nucleus membrane. So जैसे कि मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियर एनवलप होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सो दैट्स व्हाई उसके जो 2 मेम्ब्रेन्स है जो आउटर साइड में होता है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन, 1 मिनट, जो आउटर साइड में उसको हम आउटर बोल रहे हैं, एंड जो न्यूक्लियस की तरफ है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ फेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन. एंड बिकॉज द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज लाइक दैट, दिस इज द इनर एंड दिस इज द, देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस 2 membranes and this is called as the perinuclear space. Okay, and this perinuclear space is about 15 to 75 micrometer in diameter. Okay, and अब जो इनर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का वो बिल्कुल स्पिरिकल एंड इंटैक्ट होता है, बट टॉकिंग अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन, अब आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली इंटैक्ट एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होता है, वो और आगे बढ़ता है एंड वो एक्सटेंड होकर बनाता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द outer membrane and this outer membrane is extended to form the ER. ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो हमारा जो न्यूक्लियर एनवलप है उसका आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंड होता है
ER formation में. Okay, so that's why the compositions of nuclear outer membrane and ER, if we see the composition of the membrane is very much similar. And बात करते हैं फंक्शनैलिटी की. सो मेनली ये न्यूक्लियर एनवलप का फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज अ बैरियर. वो एक बैरियर की तरह काम करता है एंड वो डिफरेंशिएट करता है साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स है वो एंड द न्यूक्लियस. ओके, सो सेटिंग अ बैरियर, डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये न्यूक्लियस है एंड बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म में बसे एंड ये दोनों एक दूसरे को हिंडर भी ना करे. ओके, नाउ अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और डिटेल्स में देखें, सो उसके इनर मेम्ब्रेन में एक फाइब्रस, ओके, फाइब्रस मींस लाइक दिस, फाइब्रस मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना. Now this nuclear lamina is also the site of attachment for the chromatin. Okay, so chromatins attached in this nuclear lamella. And the second important thing of nuclear membrane is the nuclear pore complex. Now, what is this nuclear pore complex? It is a we can say a protein which allows the transfer of some of the molecules from inside nucleus to the outside in the area of cytoplasm, or if some molecules is required from the cytoplasm, it gets inside in the nucleus through this nuclear pore complex. So these two are the important components of nuclear envelope. Okay, hope this is clear to you all. Now, okay, moving forward and talking about the other. Okay, now we'll just see a little bit detail about the nuclear pore complex. So nuclear pore complex is a large multi-protein complex, means more than one protein have combined here and they have formed a structure and which is called as the multi-protein complex, and that's why they are called as a nuclear pore complex. And nuclear pore complex, they penetrates the envelope and they fuse to the in from the outer membrane to the inner membrane. Okay, they are fusing like this, so they have extended from the outer membrane and they are touching the inner membrane also. Okay, and basically if we talk about, they are contain total of 30 different proteins which are called as the nucleoporins. Okay, and the unicality of this nucleus pore complex, ये bidirectional है. Bidirectional है यानी ये two way molecules का transfer allow करते हैं, अंदर से बाहर and बाहर से अंदर. So second important feature is bidirectional transports. Okay, and एग्जाम्पल जैसे हमें आरएनए मॉलिक्यूल या राइबोसोमल सब यूनिट्स को एक्सपोर्ट करना है साइटोप्लाज्म में, सो इट विल गो थ्रू दी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. ओके, so hope this is clear to you all. Now moving forward, the other, now talking about nucleoplasm, as I have already discussed, ये similar होते हैं cytoplasm, the semi fluid of the cell, उसकी तरह ही बिल्कुल होते हैं nucleoplasm, and it is also a type of protoplasm and it is enveloped, ये enveloped रहते हैं, already हमने देखा है nuclear envelope से ये घिरा है nucleus, so nucleoplasm भी envelope से घिरे है through the nuclear membrane. Okay, and nucleoplasm mainly contain करते हैं chromosomes and the nucleus. Sorry. Oh. Now, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियाई कंटेन करते हैं. ओके, नाउ फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस, एंड ये सबसे ज्यादा मोस्ट नोटेबल स्ट्रक्चर है विद इन द न्यूक्लियस. अगर आप माइक्रोस्कोपिकली किसी सेल को विजुअलाइज करेंगे एंड न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे, सो आपको एक डार्क स्पेरिकल पैच टाइप नजर आएगा एंड वो है न्यूक्लियस. ओके, एक न्यूक्लियस में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट रह सकते हैं, एंड ये बेसिकली नॉन डिवाइडिंग सेल्स, यानी वो सेल्स जो सेल साइकिल के लिए अंडरगॉन नहीं किए हैं, बेसिकली ये स्ट्रक्चर हम तभी दे सकते हैं अगर सेल एक्टिव है और सेल साइकिल
के थ्रू गॉन हो रहा है, तो उस समय हम न्यूक्लियोलस को स्पॉट नहीं कर सकते हैं। और ये जो न्यूक्लियोलस है, अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन राइबोसोम्स सिंथेसिस, एंड दिस आरएनए is synthesized in a long piece that can be cut to form the final RNA molecules, जो कि एक आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर आता है। बट मेनली हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोलस जो है ये मेजर रोल प्ले कर रहा है राइबोसोम्स सिंथेसिस में। ओके, so these was all about the different components of nucleolus. Hope this is clear to you all, and आपको कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। टिल देन a very goodbye. Hope to meet you in the next session with some new topic. Till then, a very goodbye and have a good day.